अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में जहां उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की डेथ और बॉलीवुड में नेपोटिज्म के बारे में बात की, कंगना रनावत ने तापसी पन्नू, ऋचा चड्ढा और स्वरा भास्कर को बी ग्रेड एक्ट्रेसेस बुलाया और अब स्वरा और तापसी ने कंगना के स्टेटमेंट पे अपना रिएक्शन दिया है। कंगना ने अपने इंटरव्यू में तापसी और स्वरा को बी ग्रेड एक्ट्रेसेस कहा था। कंगना ने उन पे सवाल उठाते हुए कहा कि अगर उन्हें करण जौहर इतने पसंद हैं, तो वो अभी तक बी ग्रेड एक्ट्रेसेस क्यों हैं? कंगना ने तापसी और स्वरा का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि ये दोनों देखने में आलिया भट्ट और अनन्या पांडे से बेहतर हैं और एक्टर भी बेहतर हैं। फिर भी इन्हें बड़ी फिल्में ना मिलने का कारण है नेपोटिज्म और इससे ये बात साबित होती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये नीडी एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें करण जौहर जैसे मूवी माफियाज की चापलूसी अपने EMI भरने के लिए करनी पड़ती है। कंगना पे हमला बोलते हुए तापसी ने लिखा, रिचा एंड स्वरा, someone is really concerned about our bills and our EMIs. Such a kind, compassionate industry. So much respect for our B-grade struggle. कंगना ने उन्हें चापलूस बुलाया और कहा कि उन्होंने इन जैसे एक्ट्रेसेस के लिए फिल्म इंडस्ट्री में रास्ता बनाया। To this, Taapsee reacted, "Now I'm getting confused. So is my existence cause of nepotism as mentioned earlier by her or cause of her? I need clarity cause I wanna be clear who I am grateful to. A needy outsider wants to know." स्वरा ने भी कंगना का मजाक उड़ाते हुए लिखा, 1955 में पाथेर पंचाली के साथ कंगना जी ने पैरेलल सिनेमा चलाया। 2013 में क्वीन फिल्म के साथ फेमिनिज्म शुरू किया, पर इस सबसे पहले 1947 में उन्होंने भारत को आजादी दिलवाई थी। कहत एक अज्ञात चापलूस जरूरतमंद आउटसाइडर चापलूसी का फल आम खाते और उंगलियां चाटते हुए। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कंगना हैज टेकन जाइट्स एट तापसी। पहले भी कंगना की बहन रंगोली ने उन्हें कंगना की सस्ती कॉपी बुलाया था। आप इस मामले में किसके साथ हैं? क्या आपको लगता है कि कंगना ने सही कहा, या जैसे कि समीर सोनी ने कहा था कि वो सुशांत की मौत के थ्रू अपने पर्सनल स्कोर सेटल कर रही हैं? हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। एंटरटेनमेंट जगत की सारी खबरों के लिए जुड़े रहिए मूवी टॉकीज से। Kangna, I just wanted to ask that recently Mahesh Bhatt has backed you up about the nepotism code. So what do you have to say about that? I would like to say that such discussions, like I answered my earlier question, that such discussions are very important these days, and it is not to object to anybody's preferences. I'm talking to you, please look at me, because I'm personally answering your question, just so that you can be satisfied. So it's not an objection. If you're talking about nepotism, it's an observation. I, as an individual, my prerogative is to leave my footprints behind for the ones who'll follow me. And it's important that they know where I fell, where I walked, where I stayed, and where I ran. So it's important for me that I talk about my own experiences, not to say that people should not do what they like to do, but to make what is relevant should be relevant, not because someone doesn't speak English or someone has sweat patches because they've come in a rickshaw for an audition, or someone is sharing an apartment with 10 people in an uncool location. They shouldn't be shamed for that, and the doors shouldn't be shut on their faces because of that. And I feel why I was avoiding it, because it's a long answer, but also the fact that that today in an industry we have a lot more democratic environment is also because of people like us who've been working at it. I see newcomers easily say, भाई मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, मैं तो हिंदी में ही बात करूँगा, So it's because we have made it appear cool, isn't it? So we are going to make outsiders feel and appear cooler, and that is my prerogative as an individual. If I don't do that, then I'm not, what is the purpose of my journey? So this is a healthy talk. I mean, what Bhatt Sahab said is his perspective, and everyone has had perspectives to it. But outsiders who come in, outsiders as in, what is an outsider? There's nothing called an outsider. We're all working to make cinema, and anyone who's working for some other intention is an outsider. So A, I don't consider myself an outsider. B, whoever comes from unconventional background, they should work towards it and not call themselves, oh, we've been lucky enough because we did not face any discrimination, or, oh, we were the chosen ones because, industry has accepted us with open hands. No, because people like us have been working at it. If today people are working with actresses who come from, indie film backgrounds or are niche, so-called niche backgrounds, it's because
we have made it mainstream today. Today we can say that a film like Queen has been made mainstream because people worked at it. So we should all work at it, you know, and not to point fingers and not to make it sound like a fight, but to make the society more democratic for everyone, okay?